In this video, we will discuss about a problem based on a sequencing problem. So we start the problems based on sequencing. So we take the first question. Find the total elapsed time and idle time for the following data. So jobs we write down as I, given as 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So we have 6 jobs. Now we write down the machines. So we have two machines because we are solving problems of two machines and n jobs. So n jobs means here we have 6 jobs. So machine A having time 5, 9, 4, 7, 8, 6. Now we have machine B having time 7, 4, 8, 3, 9, 5. Now we do the solution. So let's start the solution of the problem. So basically we take the train train of 6 boxes. So first we draw a train of 6 boxes. So 6 boxes because we have 6 jobs. So on the basis of 6 jobs, we make a train of 6 boxes. Now this is the train. Now we select the minimum time. So now we check or select, we check the minimum time in the given table of machine A and B. So minimum time. So we see that uh, this machine A having 5, 9, 4, 7, 8, 6. Machine B having 7, 4, 8, 3, 9, 5. So minimum time is 3. So this is the minimum time. So this is the minimum time. Minimum time is on machine B. So we write down the minimum time. So the minimum time is 3, which is in machine B. सो हमें पता है ये रूल क्या है कि अगर मशीन ए में मिनिमम टाइम आ रहा है तो वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स एंड मशीन बी में मिनिमम टाइम आ रहा है तो वी स्टार्ट फ्रॉम लास्ट बॉक्स सो नाउ वी write from last box because the minimum time is from machine B. Now we have to check the job. In which job we have the minimum time? So job 4. Job 4 have the minimum time. So we start writing from last box. Okay, so we write down the 4. So this is our first step. So when we have completed job 4, so we eliminate this job 4 from the machines. Okay, तो 4 को फिर दोबारा नहीं लिखेंगे. So we have a remove this or eliminate this from job. Now we move to the next. So now we move
to the next step. अब नेक्स्ट स्टेप में आप या तो एक ही में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या आप दोबारा से जॉब्स को नोट कर सकते हो. सो जॉब्स आर 1, 2, 3, 5 and 6, and the machine A having time 5, 9, 4, 8, 6, and machine B having time 7, 4, 8, 9, 5. So now again we check the minimum time. So the minimum time in above table is 4. So minimum time in above table is 4. This is the minimum time, so which is 4. This is 4 and this is also 4. But both 4 are occur on different jobs. So different jobs, so there is no issue. So it's 4. So we can write down any one of them first. So we make a train again. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So here we have assigned the job 4. Now in this step, so we when we take this 3 as the minimum time, so this 4, so 3 means 3 job. So job 3, so we take a machine A, so we start from the first. We start from the first. Now we move to the next step. So next step, so we note down the remaining jobs. So 1, 2, 5 and 6. And machine A having time 5, 9, 8, 6. Machine B, machine B having time 7, 4, 9, 5. So the minimum time is 4. So the minimum time is 4, which is in machine B. Machine B. So we write from last. So which is 4. So we either we can write down as we consider machine A. So write from first box. Okay. So when we write from first box, or here we write from last box. So what is the new train? The new train will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 4, 3, and here we have the minimum time from job 2. So job 2, so here we write down the job 2. ओके. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले इसको मशीन ए को कंसीडर किया था. सो वी राइट डाउन फ्रॉम फर्स्ट. देन आफ्टर हमने किसको कंसीडर किया है? मशीन बी को. सो वी राइट डाउन फ्रॉम लास्ट. अगर आप पहले हम मशीन बी को कंसीडर कर लेते तो यहाँ पे आपको लास्ट में 2 लिखना होता, फिर हम फर्स्ट, फिर हमारा 3 जाएगा. तो इससे अगर सेम सेम जॉब पे अगर टाइम सेम आ रहा है तो हमारे बॉक्सेस मल्टीपल बॉक्सेस बनेंगे. अगर डिफरेंट जॉब्स पे टाइम आ रहा है सेम टाइम, तो वी डू नॉट नीड टू मेक द डिफरेंट बॉक्सेस, तो हमारा एक ही बॉक्स से काम हो जाएगा. ओके. सो नाउ आफ्टर राइटिंग दिस वी राइट डाउन द remaining jobs. Now we write down the job I. So that remaining jobs are 1, 5 and 6, and the machine A having time 5, 8 and 6. Machine B having time 7, 9 and 5. So which is minimum? Again here 5 is minimum time. So again we have 5. So this is 5 here and 5 here.
So that means both machine A and B having the minimum time, which is 5. So we can take any one of the. So we can write the minimum time is 5, which is in both machines. So we mention here both machines. So we can consider any of them फर्स्ट, किसी को भी हम पहले कंसीडर कर सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा. सो फर्स्ट वी कंसीडर सपोज दिस मशीन बी, सो दैट मीन्स 6. तो वी कंसीडर मशीन बी. So then we make a train. So here 1, 2, 3, 4, 5. So we write down 4, 2 and 3. So now we can write down 6. मशीन बी में आया है तो हमें लास्ट से लिखना है, फ्रॉम लास्ट. So this is our 6. So now we write down the remaining jobs. The remaining jobs we have only 1 and 5, and the machine A having 5 and 8, or machine B having 7 and 9. Okay, this is our first question. When we do the practice, so we can do this thing only same matrix or same table. So that means here with the minimum is 5. So minimum is 5, which is in machine A. So we write down from first. So we write down from first, so we can draw last train. So this is our last train. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here 6, 2, 4 to 6, and here is 3. The machine A having minimum time, so this is our 1, and the remaining, तो उसके लिए हमें अलग से अब बनाने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं. So minimum time is 8 again for this. So 8 is also in machine 1. So we write down as 5. Okay, so this is our final train. This is our final train. We have assigned the jobs. So that is the sequence of job. अब कौन सा जॉब पहले परफॉर्म करना है, कौन सा जॉब लास्ट में परफॉर्म होगा. So we start from job 3. Okay, so this is the sequencing of jobs. So this is the sequencing of jobs. So after writing the sequencing of jobs, now we find out the elapsed time and idle time. So idle time and elapsed time, so we make a table. So when we make a table, the first column we dedicated for the jobs. So first column for jobs. Now here we write down machine A. So machine A, here we write down machine B. So we have two machine A and machine B. In both the machines, we have time in, we start and a time out for performing the particular job. Similarly here, time in and time out. And here we write down idle time. Idle time. और आइडल टाइम किसके लिए निकलेगा, मशीन बी के लिए. आइडल टाइम और मशीन बी, क्योंकि मशीन बी ही वेट करेगी, मशीन ए तो अपना टास्क परफॉर्म करेगी. नाउ द सीक्वेंस ऑफ जॉब्स इज 3, 1, 5, 6, 2 and 4. So this is our sequence. As per the sequence, we write down the time for machine A and machine B. So then we start. So कोई भी मशीन जब स्टार्ट हो रही है तो at starting time will be 0. So when starting point the time will be 0. Time in 0 से start होगा. Okay, so when we start any machine, so at that time will be 0. अब टाइम आउट चेक करना है. तो टाइम आउट चेक करने के लिए अब देखते हैं मशीन ए में
थर्ड जॉब पर कितना टाइम लग रहा है? तो मशीन ए में थर्ड जॉब पर 4 आवर्स, सो दिस इज टाइम 4। सो टोटल टाइम मशीन वन के लिए कितना दे रखा है? थर्ड जॉब के लिए 4 आवर, so here is 4, so here is 4। now the job 1, तो मतलब जॉब 3 के लिए 4 आवर टाइम आउट हो गया, तो जॉब 1 कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से स्टार्ट होगा, जहाँ पे ये टाइम आउट हुआ है, और 4 से स्टार्ट होता है। और जॉब 1 के लिए कितना टाइम दे रखा है? जॉब 1 के लिए टाइम दे रखा है हमें, जॉब 1 के लिए 5 आवर्स, जॉब 1 के लिए 5 आवर्स, तो टोटल टाइम आउट कितना होगा? 4 से स्टार्ट हुई, 5 आवर टाइम दे रखा है, 4 + 5 9, 4 + 5 9, so now this job 5 start from 9। अब 9 और job 5 को कितना टाइम दे रखा है? The time of job 5 is 8, so 9 + 8 is 17, so 17 टाइम आउट होगा। अब 17 से जॉब 6 स्टार्ट होगा, तो टोटल टाइम ऑफ जॉब 6 ऑफ मशीन ए इज 6 आवर, तो 17 और 6 23, 17 6 23। नाउ next job 2 start from 23, so what is the time of job 2? Job 2 time is 9, so 23 plus 9, that is 32। और जॉब 4 कहाँ से स्टार्ट होगा? 32 से, और 32, what is the time for job 4? job 4 time is 7, so 32 plus 7 39, so this is the procedure of machine A। अब आते हैं मशीन बी के लिए। अब मशीन बी, अब दोनों मशीन स्टार्ट होंगी सेम टाइम पे, बट जो मशीन बी को काम मिलेगा वो कब काम मिलेगा? जब मशीन ए अपना काम फिनिश कर देगी। दैट मीन्स जॉब 3 का जो काम है मशीन बी ने कितने घंटे में किया? 4 आवर्स में। मशीन बी कहाँ से स्टार्ट होगी फिर? 4 से स्टार्ट होगी, तो उसका जो आइडल टाइम होगा वो कितना होगा? 4 आवर उसने वेट किया फर्स्ट जॉब के लिए, सेम टाइम पे स्टार्ट हो गई, बट उसने 4 आवर वेट किया उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। मशीन ए ने जॉब कंप्लीट किया 4 आवर्स में, सो द वेटिंग पीरियड ऑफ मशीन बी इज 4 आवर्स, सो दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम फॉर मशीन बी, एंड द टाइम इन फ्रॉम 4, मशीन बी इज 4। अब नाउ व्हाट इज द टाइम फॉर जॉब 3 मशीन बी? मशीन बी का जॉब 3 के लिए कितना टाइम है? 8 आवर्स, तो 4 + 8, और 4 टाइम आउट कितना होगा उसका? 4 + 8 12, और 12 तो इसका टाइम आउट होगा। अब हमको ये ध्यान रखना है कि ये 12 पे जब टाइम आउट हुआ है तो जो मशीन ए है उस मशीन ए का टाइम आउट कितने पे है? तो मशीन ए का टाइम आउट है 9 पे, इसका टाइम आउट है 12 पे, तो इसका मतलब है कि मशीन इसका ये कंप्लीट काम फिनिश करेगी जॉब 3 को, देन कैन डायरेक्टली टेक द जॉब 1, ओके, विदाउट एनी वेटिंग टाइम और एनी अदर टाइम, सो वी स्टार्ट फ्रॉम 12, क्योंकि यहाँ 9 पे काम फिनिश हो गया, ये 12 पे फिनिश होगी, और 12 फिनिश होती जस्ट टेक द जॉब 1, अब जॉब 1 को ले लेगी तो स्टार्ट होगा कहाँ से? 12 से ही, तो जॉब 1 7 फॉर बी, तो 12 + 7 इज 19, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए मशीन ए का यहाँ पे जो जॉब 5 फिनिश हो रहा है वो 17 पे हो रहा है, और इसका जॉब 1 जो है 19 पे हो रहा है, तो 17 और 19, तो मैं तो 19 ज्यादा ही हो रहा है, तो इसका मतलब अब डायरेक्ट फिर ये इस जॉब पे चला जाएगा, तो ये कहाँ से चला जाएगा? ये 19 से ही स्टार्ट करेगा, ओके। सो 19 से स्टार्ट करेगा, तो जॉब 5 के लिए मशीन बी का व्हाट इज द टाइम? तो जॉब 5 मशीन बी इज 9 आवर, सो 19 + 9 इज 28। अब ये 23 पे फिनिश हो गई, ये 28 पे हो रहा है, तो डायरेक्ट फिर जॉब 6 लेगा, तो वी स्टार्ट फ्रॉम 28, और जॉब 6 का कितना टाइम है? इस पे जॉब 6 का टाइम है 5 आवर, तो 28 + 5, 28 + 5 दैट इज 33, और ये 32 है, ये 33 है, तो नो इशू, so this start from 33, so this start from 33, so what is the time for job 2? 4 hour, so 33 + 4 that is 37, so ये 39 है, अब ये 37, और ये मशीन देखिए यहाँ पे मशीन बी उसका काम 37 आवर्स पे कंप्लीट हो गया, और इसका 39 तक चल रहा है, तो इसको फिर क्या करना होगा?
वेट करना होगा। तो उसका जो वेट करना होगा दैट इज और आइडल टाइम फॉर मशीन बी। तो कितने घंटे वेट करना होगा? 2 घंटे। तो 2 आवर्स उसका आइडल टाइम हो गया। तो फिर ये मशीन कहाँ से स्टार्ट होगी? 39 से स्टार्ट होगी, न कि 37 से, क्योंकि उसने 2 घंटे वेट किया। और जब 39 पे इसका टास्क ओवर हुआ देन स्टार्ट द टास्क परफॉर्मिंग फॉर जॉब 4। ओके। सो फॉर जॉब 4 के लिए मशीन बी का कितना टाइम है? जॉब 4 के लिए मशीन बी 3 आवर्स। So 39 plus 3, that is the 42. So we make the star. So when we make the star, so elapsed time. So that is called elapsed time. Elapsed time. So the total elapsed time is 42। मतलब कोई भी टास्क उसको कंप्लीट परफॉर्म करने के लिए कितना समय लगा, 0 आवर्स लेके 42 आवर्स तक। 42 आवर्स में जॉब कंप्लीट हुआ। सो दैट इज अवर elapsed टाइम फ्रॉम स्टार्ट बिगिनिंग टू एंड। For idle time, so the total idle time for machine B is total, इसको ऐड कर देते हैं टोटल आइडल टाइम को। तो विच इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6 आवर्स। So this is our answer. Now we move to the second question. So second question, same, find elapsed time and idle time for the data jobs 1, 2, 3, 4, 5, 6 machine. Machine A is given as 5, 1, 9, 3, 10. Basically, here we have only 5 jobs, so we remove this. And machine B having 2, 6, 7, 8, and 4. Okay, so this is our data. So now we do the solution of this. So same thing, we make a train. So we write down first, we make a train of 5 boxes. So we make a train of 5 boxes, 1, 2, 3, 4, and 5. Now we select the minimum time. So the minimum time in the given table is 1. So the minimum time in the given table is 1. So this is the minimum time which is in machine A, which is in machine A. So we start from the first box. So start the first box. Which job having minimum time? So job 2. Job 2. We assign the job 2. Okay. So when we assign the job 2, so this is our assigned job. So okay. So we eliminate this. So now we see the remaining times. The remaining time. So the minimum time is 2. नेक्स्ट मिनिमम टाइम इज 2, विच इज मशीन बी। तो एक ही स्टेप में कंप्लीट कर देंगे। सो द नेक्स्ट मिनिमम टाइम इज 2, विच इज फॉर मशीन बी, which is for machine B. So we write from last. So we write
फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से लिखेंगे तो इसी एक ही ट्रेन में कर देते हैं, तो लास्ट लिखेंगे जॉब वन के लिए। ओके, सो जॉब वन के लिए मिनिमम टाइम आ रहा है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस। So this is for minimum time. So we have completed this also. Okay. Now we have the three remaining jobs. So we select the next minimum. Next minimum, which is three. Next minimum is three, which is for job four. So next minimum is three. So this is the next minimum. So we write down the next minimum. The next minimum time is three for machine A, for job 4. So we start from first. So when we start from first, so we write down 4 here. Okay. So we write down 4 here. So when we completed this, so we eliminate this. So now we move to the next. What is the next minimum time in remaining two jobs? Here 9, 7, here 10 and 4. So this is the minimum time. So this is the minimum time. So we write down for job 5. So the or machine B. So the minimum time for job 4, job 5, minimum time for job 5 is 4, which is for मशीन बी। और मशीन बी के लिए किधर से लिखना है हमें, लास्ट से। जॉब 5 वी राइट डाउन जॉब 5, और रिमेनिंग टाइम हमारा क्या रह गया, 3। 3 वी राइट डाउन हियर। Okay, so we have completed in one step only. Previous question we have write for every remaining jobs. So this is our sequence. So this is our sequence of jobs. So this is our final sequence of jobs. So on the basis of this final sequence of jobs, so we move to the table. So we calculate the total elapsed time. So here we write down the jobs. So this is for machine A. This is for machine B. Here for idle time for machine B. Here we write down time in and time out. Time in, time out, time in, time out. So we write down the jobs as per the train. So these are the jobs. Now, same thing, we start the work at time 0. But initially, we are going to start any job. So time taken at 0. So now, what is the time for job 2? For machine 1 is 1 hour. So job 2, machine 1 is 1 hour. So now this is our timeout is 1. So now we start the job 4 from 1. So what is the time for job 4? 3 hour. So 1 or 1 plus 3 is equal to 4. So we start the job 3. Job 3 from 4. Job 3 time is 9 hour. So 4 plus 9 is 13. So 13. So we start the job 5 from 13. What is the time for job 5? The time for job 5 is 10. So 13 plus 10 is 23. And what is the time for job 1? Is 5 hours. So 23 plus 5 is 28. Now we, after completing the machine A task, so machine B start from 1. Okay, so machine B start from 1. So what is the idle time for machine B? 1 hour. So machine B will wait for 1 hour. Then
we see that the uh, time for machine B, job 2 is 6 hours. So 1 plus 6, 1 plus 6 is 7. So 7, so this will finish the job 2 and 7 hours. So job 4 is finished by machine A is 4 hours. So then we start from 7. 7. So what is the time for job 4, machine B? 8 hours. So 7 or 8, 15. 7, 8, 15. So machine B will free on 15 hours. So then my machine uh, A completed job third on 13 hours. So this can start from 15 itself. So 15. So what is the time for job 3? 7. So 15 plus 7, 22. Now we see that the machine A will complete the job 5 tasks on 23, but this machine is free on 22. So what is the idle time for machine B is 1 hour. So this work will start from 23. So we take the idle time for 1 hour. So what is the time for job 5 machine B is 4 hours. So 23 plus 4, 27. Of same situation here, this machine will free on 27 hours, but this machine A will finish the task on 28 hours. So this machine B will wait for 1 hour also here. So the idle time for machine B is 1 hour here. So 28. So what is the time for job 1 is 2 hours. 28 plus 2, 30. So 30. So here the total elapsed time is 30 hours. So total elapsed time is 30 hours. Or idle time, idle time for machine B is equal to 1 plus 1 plus 1 is equal to 3 hours. So we add all the time. So this is the elapsed time 30 hours and this is the idle time 3 hours.